So we're going to start off with the animation module. थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. Animation is just like the video that we have. उसमें एक concept इस्तेमाल होता है which is actually called frames per second. Okay, this is going to be crucial. यार किसकी आवाज आ रही है पीछे? This is going to be crucial in terms of calculating the time in which you are to complete or let's say execute the task. The frames per second. In a video, continuity is actually maintained, or let's say it is displayed by showing images at a particular rate. Okay. For instance, if I say that the video is made on or at a rate of 60 frames per second, that actually means that it has 60 pictures which are displayed one after the other in 1 second. समझ आती है इस बात? ठीक है? Okay. So if I say it's 30 FPS, that's 30 frames per second, 30 pictures per second, right? So your calculation of time is going to be calculated based on how many frames per second are going to be displayed. So that's like a main setting. If you look at Hollywood or let's say US, the company standard is 25 frames per second. And if you look at UK based, then it is 30 frames per second. But obviously you can also go beyond that speed. That is all based on how you wish to post edit your video or let's say animation. Not animation, but video. So this we have also talked about when we were to do the video editing. And this is exactly the same concept which is going to be applied in animation as well. Okay. So when you open up Adobe Animate and you go to File and you click on New, you will get to have certain settings. Now this is 2025 that I'm using. I'm not sure which version is installed in your computers. So fair enough, it's the same. This one actually comes with AI capabilities, so you might not be allowed to use this in the exam, most probably. Although for AI capabilities, you are to use the internet. Internet will not be provided. So 2022 is good enough. When you click on New, you'll be getting some settings in which you have some presets. Obviously, you won't be going with presets. You will be given the resolution, the dimension, and everything. The only thing that the examiner has not told the candidate to do are the frames per second. So by default, your software might display 25 or 24.9 frames. It can display 30 frames. The frames per second is totally up to you. So you can set it to 30 frames, you can set it to 60 frames, you can set it to 120 frames. That all depends on your final animation. Yeah. So you can set the dimensions. You have the width and the height settings, and you can set the frames per second as well. The platform type needs to be ActionScript 3. Lock it again. The platform type needs to be ActionScript 3, and after you have set all these settings, you can just click on Create.
right? So dimensions are basically we set to 1280. The height was 720. Let's talk about the interface first. A very few things that you need to keep in mind. This white portion that you see, we call this a stage. Stage. ठीक है? जो भी आप इस पे create करेंगे, only that is going to be visible. I can even create objects here or at this side, wherever. But anything which is going to be on stage is going to be included and visible in your animation. Anything which is outside your stage is not going to be visible. So keep that in mind. On the left hand side, we have the basic tools in which the most used tools are going to be the select. You also have the sub-selection tool and the selection tool. You have the transformation tool, which we had the free transform. Then we have the shapes, the rectangle, rectangle primitive, oval, oval primitive, and the polystar tool. We've got the line. I don't remember or recall that I've used line ever doing an A-level paper. Then we have the pen tool. This we will discuss when we get to a later stage. Standard text tool. We have the paint bucket, right? The hand tool and the zoom tool. Whenever you select a particular tool, right? So if I select the rectangle tool, its advanced properties are going to be displayed onto the right hand side, this panel, in which you can see the properties of the tool, of the object, of the frame, of the document. So as soon as you click on something which can be changed or modified, all its settings are going to be displayed onto this panel over here. Right. Moving on to the bottom section. This bottom section is actually referring to your timeline. This is where the most of your changes are going to be done. This will also reflect the duration of your animation. This will also give you the information about which frame are you on. This gives you the information or the option to scrub through your animation. Scrub through as in you want to view your animation manually. As you can see over here, there are tiny boxes. Each box is actually referring to one frame. And since I selected 30 frames per second, so you can see at 30th frame, it is displayed as 1 second. So for instance, the examiner says that the total animation should be 5 seconds. And if you're working on 30 frames per second, so how many frames are you going to use? 150. 30 FPS पे चल रहे हैं, 5 सेकंड की टोटल एनिमेशन है, तो टोटल फ्रेम्स जो आपके ऑक्यूपाई होंगे, those are going to be 150. ठीक है? तो ये कैलकुलेशन करते वक्त आपको हेल्प करेगी. अच्छा. Now I will select the rectangle tool and I will try to draw a shape. So once selected, let's talk about these settings. The fill color is basically the color which is going to be inside your shape. The stroke is actually the color which is of the border or outline, right? This what you see is basically the visibility. You can change these settings. So 100% is actually maximum visibility, 0 is going to be invisible. You can increase the stroke size, thickness of your outline. So let's have this at 5. Style you can set, the width you can set, scaling and so on and so forth. And I can also choose which type of rectangle I wish to draw. So I can have a rounded rectangle in which I can specify the radius as well, or I can go with standard rectangle, and I also have the option to change
the corners later. So let's draw a standard shape over here. Please note that I'm working in layer 1, and as soon as the shape was drawn, you can see some frames being occupied automatically by animate. कोई कहता है कि जब आपने कुछ बनाना ही है तो एटलीस्ट वो 1 second का तो होगा. Animation should be at least 1 second. You don't actually have to worry about this because you can always change the duration, and you will be changing the duration. Okay, so I will select my frames and I will click on this icon to remove the frames. You can also right click and remove frames. The shortcut is Shift F5, so you can do that. If you look closely at the first frame, it shows a box with an empty circle. However, if I select this frame, click on my shape and draw a shape, come down, you can see that the circle is now filled. That means that there is some content present on this particular frame. Second concept related to frames that you will be doing very frequently when you are executing the task. So you can see the settings, 30 frames per second. This is the first frame. If I right click on my 30th frame and select insert keyframe. Now there are certain technical definition to this particular term, the keyframe. The way I explained it, which is easier to remember so that you can make the settings appropriately, is whenever you want a major change in your animation, you insert a keyframe. Whenever you want a major change in your animation, you insert a keyframe. You will not be inserting a blank keyframe, right? You can always modify it. So I would say that always insert a keyframe whenever at a particular point you want a major change happening in your animation. Are we clear on this? Okay. So if I insert a keyframe, now effect of keyframe is on the first frame, I have a shape. I've got a shape on the first frame. I'll right click on the 30th frame and insert a keyframe. When I do, I get to see all these frames occupied. Not only that, but the last keyframe, which was frame 1, whatever that was present on frame 1 got copy pasted up until 30th frame. ठीक है, जो भी कंटेंट उससे पिछले की फ्रेम पे होता है वो उस पॉइंट तक कॉपी पेस्ट हो जाता है. It gets occupied, it gets filled. Plus, if I want to preview my animation, I can just press enter. So you can see the blue scrubber line moving across the 30 frames. That shows कि मैंने एनिमेशन को प्ले किया. बट आपको कुछ एनिमेट होता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज फर्स्ट फ्रेम पे हमने एक शेप बनाई है और 30th फ्रेम पे हमने इंसर्ट की फ्रेम किया. फर्स्ट से लेके 30th तक क्या हुआ? कॉपी पेस्ट हो गए फ्रेम्स और उसके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं हो रही जिससे वो एनिमेट करे. However, the duration is still added to your animation. So right now your animation is displaying one square with red fill and black stroke, and the duration of your animation is 1 second. Are we clear on this up until now? ठीक है. अच्छा. Again, I'm going to remove the frames, just keeping the first frame in which I have the square or the shape. Now I will select another shape or draw another shape, oval. Let's change the color, green, and the stroke, let's say blue, right? So I can draw the oval over here.
By just clicking and dragging, I get to have an oval. If I hold down Shift and draw, I'll get a perfect circle. Do we get this? Freehand click and drag, that you will get an oval, but holding down Shift and click and drag, you get a circle. Okay? Similarly with the rectangle, let me just select and remove this. If I select the rectangle, click and draw, that's a freehand rectangle, no dimensions. But if I hold down Shift and draw the rectangle, it will be a perfect square. Do we get this? अच्छा जी, एक और प्रॉपर्टी देखें. If you draw shapes in the same layer, so you draw a shape like this, and now I will draw an oval of a different color. So let's say fill is red, the stroke is black. If I draw it over this shape like this, it seems that the shape is overlapping, right? Now in order to select my shape, I will take my selection tool. Look what happens. If I click once on the shape, the inner fill gets selected. अब आपको ये नजर नहीं आ रहा होगा in the projector, but yeah, there are certain dots to display that this area is basically selected, that shape is selected. If you click once, the fill is going to be selected. So click once, fill is selected, you click and drag, the outline remains there, the fill is basically moved. If you wish to move the whole shape, including the stroke and your fill, you double click on it. When you double click on it, it will select the stroke and the fill, and then you can move it. It was drawn over this particular shape, and as you can see, when I remove it, that whole portion which was overlapping is what is removed. So again, if I draw a selection area over this particular shape, this whole thing is going to be selected. I can move it, place it over here on top of the circle, deselect, double click again my shape and place it somewhere else. You can see the overlapping section gets removed. So you need to be careful when you're drawing shapes and you're overlapping shapes on the same layer. Whatever the overlapping is, it will get removed. Keeping the shape intact, you will have to make use of the layers. We're not going to talk about layers right now. ठीक है जी, इतना क्लियर है मोहित? अच्छा, अब देखो जी, simple shape tween. Shape tween. That's the first basic animation that I basically talk about. Not the classic tween. I don't even use classic tween until and unless we have to animate on a particular path. ठीक है, जब custom path के ऊपर हमने करी तब हम classic tween की बात करेंगे. But for now, all your animation tasks can be dealt using only two tweens. One is the shape tween and one is the motion tween. So we're going to talk about the shape tween today. उसमें क्या क्या options हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं. So we'll talk about that. Let's say I draw a shape. Now I want this shape to animate and come to the right bottom corner of this stage in 2 seconds. How many seconds? 2 seconds equivalent to how many frames? 60 frames. In order to execute the shape tween, you need to focus on your starting point and your end point. आपने जितनी भी सेटिंग्स करनी है शेप ट्वीन लगाने से पहले करते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट योर स्टार्टिंग फ्रेम and your end frame. And the concept
that all, or let's say both the frames, the starting and the end, needs to have a shape in it. Shape, because there are symbols, there are objects as well. So जब आप standard shape बनाते हैं, this is actually considered as a shape. ठीक है? Now, in order to animate this, make it move from this corner to the right bottom corner in 2 seconds. Major change is going to occur in 2 seconds. So we right click on the 60th frame and we insert a keyframe. ठीक है? अब ये हमने पहले भी किया था. होता क्या है कि जब इंसर्ट की फ्रेम करेंगे तो जितना भी कंटेंट पिछले की फ्रेम पे होगा वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा अप अंटिल दैट पॉइंट. ठीक है? सो इफ आई मैन्युअली मूव माय स्क्रबर, you can see all frames have the same content and the position of the content is also the same, not changing. अब हमने मेजर चेंज कहां पे लेके आना है? हमने मेजर चेंज लेके आना है 60th फ्रेम पे. So we come down to the 60th frame, we select it, we select our shape by double clicking on it and we are going to move it here. ये चेंज मैंने किस फ्रेम पे किया? 60th मेरा एंड फ्रेम है, लास्ट फ्रेम. अच्छा, व्हाट अबाउट माय फर्स्ट फ्रेम? फर्स्ट फ्रेम पे कोई चेंज किया मैंने? नहीं. फर्स्ट फ्रेम पे इट इज एग्जैक्टली द सेम पोजीशन, ओल्ड पोजीशन. 60th पे हमने इसको यहां पे रख दिया. व्हाट अबाउट द फ्रेम्स फ्रॉम 2 to 49? आर दे सिमिलर टू फ्रेम 1 और सिमिलर टू फ्रेम 60? Frame 1. So if I come back just even one frame, like here, so you can see the square is at its original position. ठीक है? So ये जितना भी पोर्शन है 1 से लेके 49 तक, इसमें क्या है? इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही. It's only the 60th frame in which I've made the change. मेरे पास फ्रेम 1 पे शेप थी, yes or no? 60th पे, right? So important क्या है? Starting frame, end frame, shape on the first frame, shape on the last frame. ठीक है? उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है? Click or right click anywhere in this gray portion or in these frames. Right click on them and click on create shape tween. Once you do that, तो आप ये देखो कि ये जो gray है that is basically changed into orange, shows you that the content from this frame will be shifting to the content on this frame. ठीक है? So if now I preview my animation, press enter, so this will show you that the shape actually animates from one point to the other in 60 frames. जी हाजिर. Shape tween. शेप नहीं आ रही तो अच्छा. बेटा जी ऑब्जेक्टिव था कि शेप को हमने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में लीनियर मोशन के अंदर एनिमेट करना है. द एनिमेशन मस्ट टेक 2 seconds. ठीक है? फर्स्ट फ्रेम पे शेप बनाई, 60th फ्रेम पे राइट क्लिक एंड इंसर्ट की फ्रेम. फर्स्ट फ्रेम का जितना भी कंटेंट है दैट इज कॉपी पेस्टेड अप अंटिल 60th फ्रेम. 60th फ्रेम पे हमें मेजर चेंज चाहिए, दैट इज व्हाई वी एडेड द इंसर्ट की फ्रेम और वी एडेड द की फ्रेम. सो वी सिलेक्ट द 60th फ्रेम फ्रॉम द टाइमलाइन, वी सिलेक्ट आवर शेप एंड वी मूव इट टू अ न्यू पोजीशन. ठीक हो गया? उसके बाद फर्स्ट फ्रेम पे भी मेरे पास शेप है, 60th फ्रेम पे भी मेरे पास शेप है. बाकी सारे फ्रेम्स पे क्या पोजीशन है आई डोंट इवन केयर. आई एम ओनली कंसर्न विद द स्टार्टिंग फ्रेम एंड फ्रेम. ठीक हो गया? राइट क्लिक करना है ग्रे पोर्शन. ठीक है? ये देखो, राइट क्लिक एनीवेयर. इसके लिए की क्या है? स्टार्टिंग फ्रेम और एंड फ्रेम पे आपके पास शेप होनी चाहिए.
right click on it and click on create shape tween. Once you click it, आपका ये जो frames हैं, they are going to be converted into a shape tween. This is how it animates. It is taking 2 seconds from that corner to this corner. Do we get this? Any questions? ये है basically basic shape tween in a linear motion. Right? आगे चलें. अब देखो जी, going back, I'm actually undoing everything that I did. The first keyframe has this particular square or rectangle. Okay. Now, in 2 seconds, it is not only going to change its position, but also its color. ठीक है, अब हम उसकी बात कर लें. अभी हमने देखा स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसे बनता है. नाउ लेट्स सी कि स्ट्रेट लाइन तो हो लेकिन साथ में कलर भी चेंज होता है. So again, major change is expected on the 60th frame. I will right click, insert a keyframe. I want the change to happen on the 60th frame. इस पे मेरा फोकस है. ठीक है, 60th frame को select करके I am going to change the position of my shape and also change the color of my shape. Let's say the color is green, the stroke is blue. So 1 से लेके 59 तक the frames are this. These are the frames. No change. बस 60th पे हमने क्या किया, पोजीशन भी चेंज कर दी, कलर भी चेंज कर दिया. अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, शेप ही है, फर्स्ट फ्रेम पे भी लास्ट फ्रेम पे भी. राइट क्लिक करो और शेप ट्विन क्रिएट कर दो. नाउ when you run this, not only it's going to change its position or reposition, but also change its color. हो गया, simple animation. Third aspect in which we call this to modify, or let's say morphing. Morphing का मतलब क्या होगा, change into its shape. ठीक है, so going back, undoing everything that we did. First frame we have the square. We insert a keyframe on the 60th frame in 2 seconds. We want the change to happen. I will remove my square from the 60th frame. Removed. Now I will draw another shape which is different. Let's say an oval. This is on the 60th frame. All 59 frames, it has the same content. The 60th frame has the change in position, change in color, and change in shape. First frame पे भी shape है, last frame पे भी shape है. The same process. You just right click and create the shape tween. So you can see that it will not only change the position, but also change the color and shape. Do we get this? फर्स्ट फ्रेम पे ये शेप है, 60th पे हमने क्या किया, इंसर्ट की फ्रेम कर दिया. 1 से लेके 60 तक कॉपी पेस्ट हो गए फ्रेम. 60th फ्रेम पे मुझे शेप चेंज चाहिए. सो आई विल फोकस ऑन द एंड पॉइंट, नॉट इन दीज फ्रेम्स इन द मिडल. एंड पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया, इस पे से शेप रिमूव कर दी, सेलेक्ट किया और डिलीट कर दी. आई प्रेस डिलीट ऑन माई कीबोर्ड. 60th फ्रेम पे मैंने एक नई शेप ड्रॉ कर ली. लेट्स से इट्स अ सर्कल. होल्डिंग डाउन शिफ्ट, ड्रॉइंग अ सर्कल. ठीक हो गया. 60th पे चेंज आ गया. बाकी सब पे यही है. पहले पे भी शेप है, एंड पे भी शेप है, तो शेप ट्विन लगा दो.
वो ऑटोमेटिकली पोजीशन भी चेंज करेगा, शेप भी चेंज करेगा, लीनियर मोशन भी रहेगा, कलर भी चेंज करेगा. सो दिस इज व्हाट वी कॉल मॉर्फिंग. डू वी गेट दिस? ठीक है. मुझे ये बताओ 60th फ्रेम पे राइट ऑफ एज ऑफ नाउ 60th फ्रेम पे डू वी हैव अ शेप? या शेप है. मैं कहता हूं अगले 2 सेकंड में दिस सर्कल नीड्स टू कम एट दिस पोजीशन. ठीक है. उसका कलर भी चेंज कर लेंगे हम, शेप भी चेंज कर लेंगे. सेम कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी अप्लाइड. इज इट राइट? अगले 2 सेकंड का मतलब क्या बनेगा? 60 प्लस हो जाएगा, 120 पे चला गया. अच्छा, 120th फ्रेम पे तो एंड होगा. उसका स्टार्ट कहां से हो रहा है? 61 से हो रहा है. ठीक है. सो अगली एनिमेशन के लिए मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मैं इस तरह कैलकुलेट करूंगा, फ्रॉम द नेक्स्ट फ्रेम टिल द लास्ट. ठीक है. अच्छा, अगेन नाउ आई वांट टू शिफ्ट दिस सर्कल, make it appear over here, changing its shape or color, and this also should take what 2 seconds. So सबसे पहला काम, right click on the 61 frame and you will insert a keyframe. So that is setting your starting point. ठीक है. end point क्या है जी? 120. So 120 के ऊपर हमने right click किया, insert keyframe कर दिया. So 61 का content up until 120 frames तक copy paste हो गया, right? हमें चेंज कहां पे चाहिए? 120 पे. सो 120 को हम सिलेक्ट करेंगे. लेट्स से शेप को मैंने डिलीट कर दिया. विल सिलेक्ट द शेप एंड डिलीट इट. एंड ऑन द 60th फ्रेम आई विल लेट्स से ऐड अनदर शेप ऑफ येलो एंड लेट्स से पिंक एंड विल ड्रॉ अ स्क्वायर. डबल क्लिक and reposition, let's say this. ठीक है. Again the same concept. First frame is this, 61 frame is this. We right click anywhere in this gray portion and we click on shape tool. Now the total duration of my animation is what? 4 seconds. If I press enter, this is the first change, this is the second change. Do you get this? शेप तो वही है बेटा जी, शेप ऐड थोड़ी की. 61 पे तो मैंने इंसर्ट की फ्रेम किया तो 60th वाला कॉपी पेस्ट हो गया, पिछला की फ्रेम कॉपी पेस्ट होना है. उसके बाद 120 के अंदर ऐड किया और फिर 120 की पोजीशन मैंने चेंज की है, शेप चेंज किया. नाउ इन अनदर 2 seconds this shape needs to come to the left bottom corner and the shape again changes, the color changes. Another 2 seconds. 120 में कितने फ्रेम्स ऐड करोगे? आंसर क्या बना? 180. स्टार्टिंग पॉइंट 121 and end point 180. So you start from your starting point, right click on 121, insert a keyframe. Then on 180 we insert a keyframe. Starting point, end point set. Now major change required on the 180th frame. I will move or let's say delete my content on the 180th frame. Let's have a star this time. How to draw a star? So let's go to the shape. You have the polystar tool which can draw polygons and also stars. So once you select polygon or polystar tool, on the right hand side you will get to see the options. Over here you have the tool options to set to polygon or the star. I can also set the number of sides, right? I can even check the color of my star, which is going to be, let's say, yellow, and the outline is going to be black. So fill color is yellow and the stroke is black. Done ji. On the 180th frame,
I will draw a uniform star. So that is basically holding down shift and you create the star. Please note that there is some portion which is actually outside my stage. And I told you that even if you draw objects, you can make objects, you can import stuff. But if it is not present on your stage, it is not going to be a part of your animation. ठीक है? So हम deliberately इसको stage से बाहर ही रखते हैं. ठीक है? Again, point this, we have the shape, point this, we have a new shape, and right click, we click on shape tool. ठीक है? Now, if I run the whole animation, it changes into this circle, then to a square, then to a star. Animation ends. बेटा जी बेसिक शेप ट्विन समझ आई जोया? हाँ, अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके अंदर मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, क्योंकि दिस इज द पेपर इन विच यू आर प्रोन टू गिव 1000+ फाइल्स. ठीक है, ऐसा होता है. मैंने काफी पेपर चेक किए हुए, कई मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये करते हुए देखा ड्यूरिंग द टेस्ट, ड्यूरिंग द एग्जाम, ड्यूरिंग कैम्ब्रिज एग्जाम. तो इसको जरा ध्यान से सुनना. हाउ यू आर एक्चुअली सपोज टू export your file. Let's say I want to export this animation that we made. ठीक है? So export process को जरा समझ लो ध्यान से. पहली बात, जितने भी editors होते हैं ना Adobe के, उसमें you have the option to save a project file. वीडियो एडिटिंग के वक्त भी मैंने आपको कहा था you can save your project file, although ये एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, but you can save it. ठीक है? एग्जामिनर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए वो रेफर कर सकता है. इसी तरह आपके पास एनिमेशन के अंदर भी यू कैन सेव द प्रोजेक्ट फाइल. कल को आप ग्राफिक्स करेंगे उसके अंदर भी आप प्रोजेक्ट फाइल सेव कर सकते हैं. प्रोजेक्ट फाइल क्या होती है? प्रोजेक्ट फाइल एक इस तरह की फाइल होती है जिसके अंदर, फॉर इंस्टेंस, इफ आई सिट एंड स्टार्ट डूइंग माई एनिमेशन और मैंने दिन में उसको, लेट्स से आई वर्क फॉर 6 आवर्स, नाउ आई वांट टू शट डाउन माई कंप्यूटर, तो मैं क्या करूंगा? मैं उस एनिमेशन को एक्सपोर्ट तो करूंगा नहीं. आई एम इन द मिडल ऑफ डूइंग द एनिमेशन, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सेव द प्रोजेक्ट फाइल. प्रोजेक्ट फाइल से क्या होगा? मेरी सारी सेटिंग्स, मेरी एनिमेशन, सब कुछ इंटैक्ट रहेगा. एंड देन द वेरी नेक्स्ट डे आई कैन अगेन कंटिन्यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट और कंटिन्यू फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट. ठीक है? सो प्रोजेक्ट फाइल ये होती है. It will retain not only your changes but also the information of your frames and whatever you did. Sometimes the students are unable to do the animation at all. तो मैं उस केस में भी कहता हूं कि यार कुछ तो फ्रेम्स ऐड किए होंगे. मे बी द एग्जामिनर माइट ओपन योर प्रोजेक्ट फाइल एंड अवॉर्ड यू सम पॉइंट्स, जिसके लाइकलीहुड बहुत कम है, बट चांस लेना है तो ले लें. उसके लिए प्रोजेक्ट फाइल का होना इंपॉर्टेंट है. ठीक है? प्रोजेक्ट फाइल कहां से सेव होती है? Let's say we have done the animation, or let's say we want to stop working on it. We go to file and we will have save as. So we click on save as. We will select where we want to save it. I will say the name of the file is project, or let's say my animation project. This is the name of the file. Look at the extension. It is basically Adobe Animate Document. The extension is FLA. ठीक हो गया? This is not your exported file. This is not your exported animation. This is not even the requirement of the exam. ये क्या है? ये सिर्फ एक project file है. ठीक है? So don't consider this to be your final submission to the exam. ये आपने added है, extra है, optional कह लो. अगर आपने देनी है तो आप दे सकते हैं. ठीक है? So saving it on the desktop, the name of the file is my animation project and I click on save. सेव हो गया. इसमें कितने फ्रेम्स से काम हुआ है अभी तक? 180 फ्रेम्स तक, है ना? सारे चेंजेस भी हुए हुए हैं, ड्यूरेशन लगी हुई है, शेप ट्विन्स लगी हुई है, शेप्स बनाई हुई है, कलर चेंज हुए हुए हैं, सो एंड सो फोर्थ. आई कैन क्लोज एनिमेट. नाउ I have this file on my desktop. This is my project file.
If I double click on it, it will open up in Animate and all my settings will still be retained. My work will be retained. ठीक है? So you can see my animation is still intact. However, this is not, I'm repeating again, this is not your exported file. अब आते हैं exported file की तरफ, जो सबमिशन होती है आपकी एग्जाम की. Previously, the examiner used to say कि needs to be exported in a suitable format. अब suitable format क्या होता है? ठीक है, उसके अंदर ऑप्शन होती थी, तो हम उसको फर्क तरीकों से सेव करवा देते थे बच्चों से. फिर एग्जामिनर ने कहना शुरू हुआ कि जी इट नीड्स टू बी एक्सपोर्टेड इन अ सूटेबल फॉर्मेट दिस फॉर लेट्स से पर्टिकुलर वेबसाइट. फिर हमारा फॉर्मेट चेंज हो गया. अब उसने एक और चीज कहनी शुरू कर दिया है, दिस नीड्स टू बी एक्सपोर्टेड एज एनिमेटेड गिफ और जिफ. ठीक है, उसके अंदर फिर सेव होनी शुरू हो गई. समटाइम्स इट इज स्टिल सेइंग that exported in a suitable format for a website. Again, you have an option. So there are two main, or let's say two common extensions, two common formats जिसके अंदर आप export कर सकते. ठीक है, export करनी कैसे? You'll go on to file, you'll go on to export. You get to see export image, you get to see export image legacy, you have export movie, you have export video or media, you have export animated GIF. तो बेटा जी जब वो animated GIF बोले ना, तो this is the option. Suitable format बोले तब भी आप इसमें कर सकते हो, animated GIF बोल दे तब तो करना ही इसमें है. लेकिन अगर सूटेबल फॉर्मेट बोले तो एक और फॉर्मेट भी है जिसके अंदर हम सेव कर सकते हैं. दैट इज बेसिकली द शॉक वेव फाइल और एक्सपोर्ट मूवी. दिस व्हाट यू मेड इज एक्चुअली अ मूवी एनिमेटेड. सो इफ आई क्लिक ऑन इट, इट आस्क्स मी वेयर टू सेव इट. मैंने सेलेक्ट किया डेस्कटॉप, माय एनिमेशन, इसको मैं माय एनिमेशन ही कर देता हूं सिर्फ, नॉट द प्रोजेक्ट. अच्छा, सेव एज टाइप देखो क्या आ रहा है, गिफ नहीं आ रहा, गिफ सीक्वेंस आ रहा. ठीक है. अच्छा, इफ आई ड्रॉप दिस डाउन आई गेट टू सी एन ऑप्शन कॉल्ड SWF व्हाट मूवी. सो इफ यू सिलेक्ट दिस, दिस विल बी वन फॉर्मेट जो कि मूवी के रेफरेंस से आता है. सो हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं बाय माय एनिमेशन, इसका नाम रख दें माय एनिमेशन SWF. ठीक है, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें बिटवीन ऑल द फॉर्मेट्स. वी क्लिक ऑन सेव, ये सेव हो गई. अच्छा, इसी तरह अगर वो एनिमेटेड गिफ का कहता है तो गिफ सीक्वेंस इज नॉट एनिमेटेड गिफ. गिफ सीक्वेंस अभी हम कर रहे थे ना, एक्सपोर्ट मूवी आ रहा था, गिफ सीक्वेंस, दैट इज नॉट द एनिमेटेड गिफ. फाइल में गए, एक्सपोर्ट में आए, एनिमेटेड गिफ कहाँ है तो एनिमेटेड गिफ पे क्लिक करना है. मूवी पे जाके एनिमेटेड वो जो गिफ सीक्वेंस है उसको नहीं सिलेक्ट करना. एनिमेटेड गिफ, select this, this will open up, it will start to process your data, it will take some time. Once done, you can see the settings over here, you can even change the width and the height, right? And you can set the looping. Looping means over and over again. So by default it is set to forever. You can also set it to once. ठीक है, you will get to see this requirement in the paper जब वो कहता है कि your animation must loop. ठीक है, so GIF के केस में यहां पे सेटिंग होती है. अगर आपको फॉरएवर नहीं आ रहा तो आप उसको फॉरएवर पे कर देंगे तो वो बार बार चलेगा. Once done, दोबारा से एक्सपोर्ट, I we need to save it. Animated GIF, process, we click on save. Once we click on save, it will ask us where to save it. It's on the desktop. नाम इसका रख देते हैं
my animation GIF. यहां पे देखो GIF sequence लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? GIF image, right? So we click on save and then we click on done. After it is saved, it will be back to your stage. Acha. Now I'm going to put all these files into, no, I will keep them here. This is my SWF, this is my animated GIF, and let's have a new folder because I don't want my desktop to clutter with 180 files. Let's look at this. We'll go to file, we click on export, we click on export movie. अब बच्चे ने पढ़ा एनिमेटेड गिफ, न्यू फोल्डर डाल देते हैं, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू सेव इट एज गिफ सीक्वेंस. मेरी एनिमेशन के कितने फ्रेम्स? 180. फोल्डर में सेव करो, इज इज द न्यू फोल्डर टू, या ओके. सो एनिमेशन नाम दे देते हैं सिर्फ इसको, एंड दिस इज अ गिफ सीक्वेंस. वी क्लिक ऑन सेव. Settings key, we click on OK. It is exporting all the frames. ठीक है, अभी देखो जी, this is my SWF. This is only playable using a flash player. Flash player is no longer available. तो आपको इंटरनेट से भी नहीं मिलता. सबसे बड़ा मसला होता है SWF फाइल तो बना ली, लेकिन उसको प्ले कहाँ करें, चेक कहाँ करें अपनी एनिमेशन को, एक्सपोर्टेड फाइल को. कई दफा होता है ना, बच्चा कहता है कि काम कर लिए, एनिमेट पर तो सही नजर आ रहा है, लेट्स सी द एक्सपोर्टेड फाइल. तो एक्सपोर्टेड फाइल आपको चलाने के लिए फ्लैश प्लेयर चाहिए, फ्लैश प्लेयर है नहीं. अच्छा, उसका एक हैक मैंने जो ढूंढा हुआ है वो ये है कि आई हैव इंस्टॉल्ड फ्लैश CS6 ऑन माई कंप्यूटर. CS6 के अंदर फ्लैश प्लेयर बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉल हो जाता है. तो माई कंप्यूटर हैज द फ्लैश प्लेयर. अगर मैं इसको डाउनलोड करना चाहूँ गूगल से तो शायद मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है. सो दैट इज वन. इफ आई जस्ट शो यू द SWF, डबल क्लिक ऑन इट, इट विल प्ले इन द फ्लैश प्लेयर. आप ये देखा कि लूपिंग की ऑप्शन जो थी वो गिफ के अंदर आ रही थी, SWF के लिए कोई नहीं आई थी, क्योंकि SWF बाय डिफॉल्ट फ्लैश प्लेयर से ऑपरेट होता है, तो उस पर लूप ऑटोमेटिकली अप्लाइड होता है. आप कंट्रोल में जाके ये देख सकते हैं कि द लूप इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, ठीक है. सो यू डोंट हैव टू सेट द ऑप्शंस फॉर SWF फाइल, इट इज ओनली फॉर द एनिमेटेड गिफ. दूसरा नोट करो कि जो स्टार था विच वॉज आउटसाइड द स्टेज, इट इज स्टिल गोइंग आउटसाइड माई स्टेज, ठीक है, इट्स नॉट विजिबल. लेट्स लुक एट द एनिमेटेड गिफ. डबल क्लिक ऑन इट. This is my animated GIF. Same animation, ठीक है. अब आप जाए उसके ऊपर जो हमने सेव किया था as GIF sequence, saved it in this folder. उसने क्या किया, हर फ्रेम को इमेज में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट किया. तो मेरी एनिमेशन के कितने थे जी फ्रेम्स? 180. If I just select all of them, how many? ये समझ आई? So when it says animated GIF, that does not mean GIF sequence. It means the GIF image. Export के अंदर animated GIF की ऑप्शन है, ठीक है. गलती से भी ये काम नहीं करना. This is wrong. This is 0. And this is why students end up submitting 500 plus files in P4. अब अगर आपकी एनिमेशन होती लेट्स से 30 सेकंड्स की, 30 FPS पे आप काम कर रहे हैं, तो 900 फाइल्स आपकी बन जानी थी. लेकिन हाँ, अगर मैं इसको एक व्यूअर में खोलूं, लेट्स से फोटोज, ठीक है, and I hold down my right arrow key, तो ये मुझे
frame by frame actually picture change करके दिखा रहा है, but this is not the actual requirement. And look at the resolution as well, it is all pretty distorted. ठीक है, so this is not the correct format. Clear on this? अब एक और काम करते हैं साथ ही साथ, after which I'll assign you the first exercise. ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई, I'll remove all the frames. Shift F5. I will also remove the shape tween from this. Right click shape, remove shape tween, and I will also remove my shape. Changing the stage color. Let's say the stage color, I want it to be black. So this is my stage. Selection tool selected. On the right hand side, I've got the document properties in which I have the stage color. If I click on it, I can change the color of my stage. in the create here, उसका तो automatically stage black हो गया. Settings में हुआ उसकी. अच्छा, I'll take my text tool. Once I select the text tool, I can set the properties, I can set the font, I can set it to be regular or bold or italic. I can set its color, let's say it's going to be red. I can set the size as well. Once done, I will click here and I will type something. ठीक हो गया. Click on the selection tool. After the selection is made, मेरी कुछ settings थी जो कि मैंने text के ऊपर की हुई थी, right? Red, 24 points, this and that. I can also click on the transform tool to manually adjust my text. Done. If I hold down shift and resize it, the aspect ratio is maintained. If I hold down shift and do it. If I manually do it like this, so this is freehand. This is not aspect ratio maintained. ठीक है? This is the same concept which can be applied to the shapes as well. अच्छा जी, करना क्या है? गौर से सुनना. Text added. This is my selection. You can see that this whole is actually acting as one whole object. One whole what? Object. This is not a shape. ठीक है? However, we can convert this to a shape. अच्छा, जब मैं इसको move करता हूं, this whole text moves, right? पूरा text move हो जाता है. I can break this one object into individual objects. मतलब मेरा M separate हो जाएगा, U separate हो जाएगा, N separate, E separate, E separate. All the letters are going to be separated. How to do this? Control plus B is the shortcut key. Control plus B. We call this option break apart. ठीक हो गया? Now if I move my text, I can move one letter at one time. It depends on the scenario in which you want the whole text to be compiled or you want the separate letters. ठीक है? You see the blue outline? Huh? It is still the object. Control Z करते, undo करते, and we were here, right? One whole object. You can also set this option if you don't remember the shortcut key. You can select your text. You can go on to modify. Over here, you will get to see break apart. ठीक हो गया? अच्छा, अब जरा गौर से देखना. Again, you will not be able to view it on the projector, but let me check if I am able to show this. So one whole object. Control plus B to do what? Break apart. Individual objects बन गए. Control plus B again to convert them into shape. Can you see the dots? Is the outline there? The blue outline.
No, that means it is being converted into shape now. Now each letter is acting like a shape. ठीक हो गया? अच्छा, सिनेरियो क्या है? I want to make the text visible in 3 seconds. Text visible in 3 seconds. Not to be visible throughout 3 seconds. In 3 seconds it should be visible. जैसे को कहते हैं फेड इन करना. सही है? टेक्स्ट फेड इन होगा टू विजिबिलिटी. अच्छा, इज माई टेक्स्ट इन शेप? यस और नो? यस. कितने सेकंड्स? 3 seconds. 30 fps पे 3 seconds क्या बने? 90. So right click on it, insert a keyframe. Starting point, end point set. Shape है through and through. अच्छा, मुझे ये बताओ 90th फ्रेम पे टेक्स्ट की विजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 100. So starting point पे इसकी विजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? 0. So I will select the first frame now, not the last, because I want to make the text appear in 3 seconds. ठीक है? So I'll select the first frame, select my text, head over to my property section. Over here, I've got color effects. Drop it down, I've got the alpha settings. ठीक हो गया? Alpha settings को क्लिक किया, ये क्या आ रहा है? 100%. I want this to be 0%. Alpha setting से visibility control होती है. ठीक हो गया? So first frame पे क्या हुआ? Alpha setting 0 हो गई. Last frame पे क्या है? 100. Right click, create shape tween. First पे कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना शेप ट्विन करने का. फर्स्ट फ्रेम पे भी शेप है, लास्ट फ्रेम पे भी शेप है, लेकिन फर्स्ट फ्रेम की विजिबिलिटी को क्या किया मैंने? 0 कर दिया. ठीक है? तो जब ये एनिमेशन प्ले होगी तो इट विल सीम दैट अ टेक्स्ट इज अपेयरिंग इन 3 seconds. दिस इज ऑल्सो एनिमेशन. अब मैं कहता हूं इन द नेक्स्ट 3 seconds द टेक्स्ट शुड डिसअपेयर. 3 seconds पहली बात है, 90 में ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 180 हो जाएगा. स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनेगा? 91. वेरी नाइस. सो 91 पे आके पहले हमने स्टार्टिंग पॉइंट सेट किया, इंसर्ट की फ्रेम, देन मूव ऑन टू 180, राइट क्लिक एंड वी इंसर्ट की फ्रेम अगेन. नाउ starting frame which was 91, visibility should be 100. 180, 0. Selected text, go to the properties. Over here we have the frame. We can click on color effects, alpha setting set to 0 on 180th frame. Right click, click on shape. Run the animation. This is how it looks. 3 seconds it appears, 3 seconds it disappears. ठीक हो गया? अब मूवी के अंदर जो क्रेडिट्स होते हैं वो आप एनिमेट कर सकते हैं? कर सकते हैं. Going from down to up in animation that can be done as well. ठीक है? Whatever you have learned in this particular class, you should be able to do the task that I'm going to share. Please note, do the task in just one layer. Then we talk about multiple layers as well. ठीक है? टास्क आपको मैं ईमेल करता हूं, उसको करने की कोशिश करें. इसमें सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है. जस्ट फोकस ऑन शेप ट्वीन, स्टार्टिंग फ्रेम, एंड फ्रेम, सेटिंग सेट करो, मेक श्योर करो शेप्स हैं, राइट क्लिक करो, शेप ट्वीन अप्लाई करो. ठीक हो गया? ट्राई इट आउट, उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं फिर.